based on the all the students in DBMS course. Okay, so please give your best. I will also try to explain everything. If you feel any query from your side, then please feel free to ask me anytime. Okay, so don't worry. So we will be able to do all these things. Okay, so on the today's class, we will be going to cover more on the select statement, more on the constraint, more on the we can say in comparison operator. Okay, so we will try to cover up all these things, and we will also exercise in the lab some part from this, and more things we will also explain in the lab. Okay, so don't worry about the assignment will be completed easily. Okay, so whenever you will be able to complete the syllabus for the SQL given for the assignments, then you will be able to do the assignment easily. Okay, so don't worry about the assignments. Okay, currently I'm just knowing about the where clause, more on the compare with the comparison operator, and some part related to the order by clause. Okay, so just I'm sharing my screen, so please interrupt me whenever you have any query. Don't hesitate, please ask any query. Otherwise you may have, it may happen that you may face some problems during your quiz exam or some other questions or some other interview, because SQL is a very important for a exam as well as for interview. Okay, so don't worry. Okay, all of you, my screen is visible to you? Yes, sir. Okay, fine, thank you. So now you can see, I will also exercise all these commands whatever I am explaining in the lab session. Okay, don't worry, we are having a 1.5 hour time. Okay, so content for this lab, we are focusing on the check and unique constraint. In the previous slide or in the previous lecture, if you have seen, you are remember, then we have seen the constraint like no, null, not null, है ना, and like primary key, unique, these constraints we have seen in the previous class. Okay, in the next class or in the this class, we are focusing on the check constraint. Briefly we have discussed about the check constraint. Now we are going to see that with the example. Now we can also see the creation of a table using the existing table, or how we can copy a existing table. Okay, so that we have to see. Then we have to more focus on the where clause. Okay, then last we will focus on the order by clause. Okay, so now we start with the check and unique constraint that I think you have also seen in the last class something about it. Now we are seeing with the example. So you can see this table is created with the name new book. In this table, we are having a different number of columns like book ID, book name, ISBN number, number of pages, book price. Okay, so these are the columns. In these column, you can see these are the data types: varchar 15, varchar integer 5, and a decimal. So these are the actually data types that we have used here. And now here we have specified the constraint, like here constraint we have specified not, null, and a unique. So these two constraints specify for the first one. Here we have not specified any other constraint apart from the data type, not, null, unique. So these two constraints are specified for this ISBN. Now along with this data type, we have specified new constraint that is check. So how we can utilize this check constraint? So check constraint we have specified here number of fields greater than 3. It means whenever you are entering the value for this column, then the value should be greater than 3. If the value is like 0, -1, and so on, or 2, and so in this case, or 3, even 3, if you are entering this value less than 3, so it means, or less than or equals to 3, if you are entering this value in this column, then in that case this value will not be inserted in the table. Or whenever you are inserting a record along with this value for this specific column, then this value then this record will not be inserted. As whenever you are going to insert any record, then the record
must satisfy the condition for this column. Okay, so this is a meaning for the check constraint. Okay, you can specify condition in another way, whatever the conditional operator you can use here, and any condition you can specify, the condition must be satisfied. Okay, for this example, the one in the insertion command is given here. Here you can see insert into the node in new book. So you can see here number of pages we are seeing, they are 20. Okay, so number of pages 20. So number of pages 20 is greater than 3, then condition is satisfied. It means this record will be inserted successfully. Okay, but in this case you can see this record will not be inserted, as here you can see number of pages, as number of pages the second last attribute. So second last attribute we are seeing here it is 1. So 1 is not greater than 3, so this condition is false. So due to this condition we are unable to insert this record in the table. Okay, so in this way you can specify the check constraint. Is it okay? I think it is clear to all of you. Okay, so this is only one sample example for number of pages. Several other example you can create. We will see more detail in the constraint slide. Okay, don't worry. Okay, is it okay for all? Okay, so now next thing is creation of a table from a existing table. In this case we can create a table from another table, or we can copy all the columns along with the values, okay, of the particular table. So it means that we have already created a one table, that we can create a copy of that, or we can copy all the data or all the structure of that table into the new table. So the syntax for creation of the table, that table, create table, and table name here it is for new table, and then column for the new table that you want to specify, you can specify blank. It means if you are specifying blank, that means whole structure of the table, or means all the column of the existing table will be copied. And which table you want to copy, that you have to specify here, asterisk for all the columns or from the table, that is old table that is already created. Okay, so you can see the example, create table with copying all the column along with the values. So new table will be created with the name of stud. Okay, stud. Okay, just a minute. Hello, I'm sorry for interruption. So here you can see new table will be created with the name of stud, and all the data of the student table will be copied in this stud table along with the column type, data type, constraint, all these things will be copied in this stud table. Okay, so this is just a copying a student table in the new table. Okay, and then next is, instead of copying all the rows, we can copy a selected row based on the condition. Like we only want to copy the data of the students only where roll number should be less than 104. So you can specify that things by you specifying a where clause. Okay, see here you can add select create table stud 1. Okay, stud 1, and the select asterisk from student where the roll number is less than 104. So only the roll number which have less than which are less than 104, that rows will be selected and then copied into the stud 1. Okay, is it okay? Suppose I ask you to copy the whole structure of the table, but you should not copy the data of the table. Then how you can do? Like if I ask you, like there is a student table,
and here roll number, name, okay, branch, marks, etc. Okay, and there is some data that is given here in the column wise. Okay, there will be some data. Okay, I don't want to copy this data. I only want to the structure of the table. Structure means columns, name, number of columns, and type of the columns, and constraint on the column. Only I want to copy that structure of the table, not the data. Okay, so how you can do? Yes, can anyone tell me? So describe use करके. नहीं, describe just show the information or details of the table or structure of the table. It will not copy. You have to copy na structure while creating the table. So you can specify a condition that will not be true for any rows. Then none of the row will be copied into the new table, है ना? अगर हम ऐसा कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर दें यहाँ पे वेयर के पास में कि वो कंडीशन हर एक रोज के लिए फॉल्स हो, that means we can copy. Is it okay now? Yes, sir. So you can do it by specifying a condition that will always be false. You can see where 1 equals to 2, so it will never be true. It will always false. So it means for every row this condition will be false. So it means whenever you are copying this table, so only the structure of the table will be copied, not the data of the table. Is it okay? Okay, na? Yes, sir. Okay, fine. Next, if you sometimes it may be also happen that you are not able to, or you don't want to copy all the column. You only want to some, like here roll number, branch, marks are the column, but I only want to copy the roll number and name column, or roll number or branch column. Not, I don't want to copy marks column. So how we can do it? We can specify the specific column here along with the table name. So you can see here table 3, start 3 we are creating, and then we are only specifying the roll number, name, address only. So only the value of the roll number, name, address will be copied from the old table. Is it okay? So here if you have any query, then please ask me. Yes, any query here? कोई query है? No, sir. Okay, thank you. Next, now we are going to see the comparison conditions that can be used for the where clause. Here you can see we have specified some condition like equal, less than, है ना? So another comparison operators that you can utilize for the where clause, so that we are going to study in the next, है ना?
Okay, so in the relational operator you can utilize to specify the conditional. Logical operator you can specify, as well as other operator like between, in, is, null, like, etc. you can utilize to specify the condition in the where clause. Okay, so the condition that satisfy a specific row, or a row that satisfy the given condition, that row will be selected or that row will be displayed, and the row that is not satisfying the condition given in the where clause, that will be eliminated. Okay ना, ये ध्यान रखना, जो रोज होंगी जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी वो रो सिलेक्ट हो जाएंगी और डिस्प्ले हो जाएंगी, और बाकी की रो एलिमिनेट हो जाएंगी. इज इट ओके ना? सो यू कैन सी we have to write a query like show the details of the students whose marks greater than 95. So how you can write the query? You can write, we have to show the details of the student. So student table होगा, suppose you can assume कर सकते हो student table में क्या होगा, roll number होगा, name होगा, okay, marks होगा, okay, branch होगा, city होगा, okay. So ऐसा और भी information हो सकता है. So you need to display all the information. So how you can display all the information of the student? Yes, how you can display? Just providing here asterisk. Asterisk shows the all the column that you want to display. Select asterisk. Now you have to specify from clause, from which table you want to select. That here you can specify your student, and what is the condition, which row you want to select. Marks greater than. Okay, good. Okay, so here we can specify where, as where marks less than marks greater than 95. Okay na, 95. Okay, okay, so you can write this query like here you can see the solution, select asterisk from students where marks greater than 95. Okay, so similarly you can write less than or equals to, you can specify here less than or equals to 35 if the rows that satisfying this condition will be selected, or the students that satisfying this condition will be displayed here, hai na? Okay, so you can easily utilize these. Now if I ask you to show the details of all the student except C branch, then how you can do it? सारे के सारे स्टूडेंट चाहिए बट सी ब्रांच के स्टूडेंट नहीं चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के नहीं चाहिए. सो हाउ यू कैन स्पेसिफाई, हाउ यू कैन राइट क्वेरी? select asterisk from student तो सेम ही रहेगा, बट हाउ यू कैन स्पेसिफाई where clause, where branch, how you will specify condition? Not equals to. Very good, not equals to, either you can utilize this or either you can utilize this. Okay, so one of them you can not equals to C. Okay, so character string whenever you are specifying, so write the single quote. Okay, single quote or double quote, either you can use. Okay na, so you can see this is an example. Okay, okay, next logical conditions you can utilize to specify the multiple conditions. Like if I ask you to show the details of the students whose marks greater than or equals to 60 and less than 95, तो marks आपके किसके बीच में हो, greater than और 60 होना चाहिए और less than किससे हो, 95 से. तो दो 95 और 60 के बीच के मार्क्स हमें चाहिए बट एक्सक्लूडिंग 95. So how you can write this query? You can specify the AND condition. So AND, there are three logical operator, and or not. Okay, not is just for inverting the result. Okay, whenever condition is true, that it will make it as a false. Okay, so not to just negation के लिए होता है, that is you, I think all of you have used in C or C++ or on other programming languages. So it will work in similar way. So here you can see select asterisk from student where marks greater than 60 and marks less than 95. So you can specify the condition. Okay, similarly you can write show the details of the student ENC branch whose marks less than 70. So it is less than 70, not less than equals to, है ना? So it should not be there. Okay, so you can specify branch equals to ENC and marks less than 70. Okay, so different attributes you can also use, है ना?
Similarly, if I ask you show the details of all the students who lives in Patiala or marks greater than 80, then how you will write? How you will write? Lives in Patiala, it means we can take as a city. Okay, so city equals to Patiala or marks greater than 80. Is it okay? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है. Okay, so now apart from these operators, we can also use other operators like between and, not between, set के लिए we can use in, not in, is null, is not null, like. These are other operators that you can also use along with the where. So what is the meaning of between and? So between and just allows the selection of rows that contains value between within a specified lower and upper limit. Okay, so you can include the range, whatever the range specified, that will be inclusive here. So you can specify, like suppose I ask you to write a query that will display the information of the student whose marks between 70 and 90. Like this query we can also write in similar way using the relational operator. How? Like marks between, it means it should be greater than or equals to 70, and marks less than or equals to 90. So this same query or same condition we are specifying with the between and. Okay, between 70 and 90. So we have specified here greater than or equals to or less than or equals to, as here 70 and 90 are inclusive in the result. Okay, whatever the limit we are specifying, lower as an upper, that will be inclusive in the result. Okay, so you can write this query just by writing where marks between 70 and 90 instead of less than greater than, you can directly write it, है ना? Okay, so between and you can use. Similarly, you can use not between. The range of whatever the range you are specifying, that will be excluded. So marks should be, if you are specifying that greater than it should be less than 70 or greater than 90. So the range that you are going to exclude here, apart from the between 70 and 90, that you can directly write using the not between, है ना? So you can directly write here, you can see. Okay, not between 70 and 90. So 70 and 90, the marks, the student, those who are having a marks out of the less than the 70 and greater than the 90, that will be displayed here. Okay, so is there any query in this case? Yes? No, sir. No. Okay, good. Okay, so similarly you can use in or not in operator. Like in will be used as a membership conditions whenever particular members belonging to a specified set of the values, then this will be written true, otherwise written false. Okay, here not in is the opposite of the in. When a specified value or given value is not matching in the value, then it will return true. For example, if I ask you to find out the roll number of the students whose name either Ankit, either Rajesh or Anil, so इनमें से कोई भी नाम हो, then the roll number of the students will be returned. Okay, so this is the actually set of the name. Okay, okay, so you can specify this condition by using the where clause, where name in. So this is a set that you are specifying multiple values or any number of values that you can specify here, and if name belongs to this Ankit or Rajesh or Anil, then that row will be returned or that row will be displayed. Okay, so where name in this, then this row will be displayed. Okay, or that roll number of those students will be displayed. Is it okay? Similarly, you can utilize not in. Okay, city not in Patiala. Here we have to find out the students who do not live in the Patiala, Delhi, Bhopal. So you can specify this as a set. Okay, so student those are not living in Patiala, Delhi, Bhopal, that row will be returned. Okay,
Is it okay? Can you tell me, can we write these two conditions with another way without using in or not in? Yes. बताओ भाई. जैसे पिछली क्लास में कराया था नेम इज इक्वल टू अंकित करके, हाँ, वैसे भी हो जाएगा. yes, you can write like name equals to Ankit और लगाना पड़ेगा. दिस इज वर्क फॉर वर्क एज और, है ना. नेम इक्वल्स टू अंकित हो या फिर क्या हो, नेम इक्वल्स टू राजेश हो. ओके ओके, और name equals to Anil. But whenever we are having 100 items, then in this case specifying such kind of condition, then it will become as a complex, है ना. थोड़ा सा एक बहुत complex type की conditions देखेगी, है ना. So instead, so avoiding it, we can use in. So in is basically used for set. Set can contain multiple elements. Is it okay na? Okay, good. So next we can use is null, is not null to compare or to check a given element or given attributes having any value or not. Okay, so null is a value in the SQL. It is not equals to the empty, है ना, or it cannot be equal to any other value, or it cannot be tested with using equal operator. Okay, so in order to test the value, in order to test the given attributes for a null, as given attributes contain any value or it contain a null, so you can utilize the is null operator. Okay, that will just check for a column, those are null. Okay, similarly the opposite of it, you can use is not null. It just check a given attributes contain a null value or not null, है ना. So in case of any value, it will return true, whereas in case of null, it will return true. Okay, so you can see, find the name of the student whose phone number is null. Suppose we have added a student, but we have not included their phone number initially, so we can check the students whose phone number is not added. So later we can change, later we can add, or we can ask the students to provide their numbers. So how we can write such query? We can write directly just select name from student where phone number is null, where phone number is null. Okay, similarly you can utilize not null. Okay, phone number is not null, so the students those are phone number is already provided, they those student will be displayed here. Okay na, is it okay? Yes, sir. Okay, good. Now like is a very important, इस पर assignment में भी questions हैं. Okay, you can see like condition allow comparison of one string value with another string. How we can compare two string? So in order to compare two string, or in order to search a particular string or with a specified character or with specified number of character, you can use in all the cases like. Okay, so how you can use like is used along with some specified symbol like percentage or underscore. So these two are the wild card characters that are used to search or to make a search condition or to search a given string. Okay, so how you can use, whenever we are using percentage, it will represent any sequence of zero. Whenever we are writing percentage, it means here at this place any number of character can be there, or 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 any sequence of the character may be there. Okay, okay, but whenever we are writing underscore, it means there may be a single character, but whatever the character, it may happen here. Okay, so suppose I ask you to write a query to find out the name and branch of the student. क्या क्या चाहिए आपको? Name and branch of the student whose name begins with letter R. Okay, like if suppose there are a different name like Rajesh, I have written. Okay, and Suresh, I have written. Amit, I have written. Okay, Ajay, I have written. But it is showing that name whose letter or whose name begin with letter R. So here you can see
व्हाट विल बी द रिजल्ट इन दिस केस? अगर मैंने ये टेबल रखा है, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? कौन सा नेम आएगा जिसका नेम आर से स्टार्ट हो रहा है? राजेश। ये भी नहीं आएगा, राजेश भी नहीं आएगा। रीजन ये है, दिस स्मॉल इज आर की वजह। बिल्कुल, इट इज ए स्मॉल आर और इट इज ए कैपिटल आर। आगे जाके मैं तुमको और भी स्ट्रिंग फंक्शंस बताऊंगा जिसमें अपर लोअर का यूज होता है। इस केस में अगर मेरे को इग्नोर केस करना है तो अपर को लोअर को, या जैसा भी हो, कंपैरिजन कंडीशन ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो अपर को लोअर का कन्वर्ट कर दे या लोअर को अपर में कन्वर्ट करके कंपेयर करे। वी विल सी लेटर इन द नेक्स्ट क्लास में, और आई थिंक सर विल टेल यू इन द लेक्चर क्लास। ओके, so here no name will be selected, but according to this we can write a query. If suppose name is starting like this, okay, then this will be selected. It is starting from R. So how you can write query? The starting character should be R, later whatever it can have. Okay, okay, बाद में कुछ भी इसके पास हो वो सब हो सकता है, बट स्टार्टिंग R से होना चाहिए। तो how we can write? Where name like start first character R and later कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी के लिए हम क्या यूज करेंगे? परसेंटेज। सो दैट इज डिनोट एनी सीक्वेंस 0 और मोर कैरेक्टर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, कुछ भी, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। इज इट ओके? सो दैट विल सिलेक्ट द स्ट्रिंग or the name, those are having or those are begins with the letter R. Okay, is it okay? Okay, yes, Yes. or no? Okay, thank you. तो यहाँ पे बताओ इसको कैसे करोगे? Retrieve the name of the student whose name contains second character as n. तो फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, बट सेकंड n होना चाहिए। How you will write? देखो स्टार्टिंग underscore and में percentage लाइक योर नेम कैसे लिखोगे? नेम लाइक underscore and percentage अंडरस्कोर एन परसेंटेज। इज इट करेक्ट? एनीवन इज टेलिंग एनीथिंग एल्स? कोई ऐसे तो नहीं बोल रहा? आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, ऐसा? नहीं सर, पहले ऑलरेडी। क्यों भाई? देखो ये गलत है, दिस इज करेक्ट, बिकॉज इन दिस केस आगे कितने भी करेक्टर हो सकते हैं ना। इट इज नॉट गारंटीड दैट ओनली वन करेक्टर विल बी बिलोंगिंग टू द वन करेक्टर ओनली will be before the end. There will not be any guarantee na with the percentage denote the any number of character na, any sequence of 0 or more character na. So that's why there may be different characters, but here it is guaranteed that only one character होगा यहाँ पे आगे, क्योंकि ये only one को ही represent करता है, but whatever the character that can have, है ना? So that's why we have to use underscore and then later बाद में कुछ भी हो सकता है, then we can specify percentage. Is it okay? Okay. Similarly, if I ask you retrieve the name of the student whose name have the letter A anywhere, A कहीं पे भी हो, तो आगे कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और पीछे कुछ भी हो सकता है। लिख सकते हैं? Is it correct? Yes, sir. Okay, so you can write. Okay, okay. Next देखो, I ask you to retrieve the name of the student whose name is 6 character long. How you will write? Yes, please बताओ यार। देखो वन वे कम्युनिकेशन ना करो यार। हेलो, कोई नहीं Yes. बताएगा? कैसे लिखेंगे? हेलो, एनीवन प्लीज? अरे 6 कैरेक्टर लॉन्ग है तो पहला कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी कुछ भी हो सकता है, तीसरा भी कुछ भी हो सकता है, चौथा भी कुछ भी हो सकता है, पांचवा छठवा कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट राइट कर दो। ओके ना? तो 6 अंडरस्कोर आ जाएंगे ना। नेम लाइक
कुछ भी हो, बस 6 से ज्यादा तो कभी नहीं होगा इसमें। कुछ भी हो सकता है बट 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, वी कैन राइट नॉट मोर देन 6। ओके Yes, sir. ओके ना, ओके। अब Yes. next, right, retrieve the name of the student whose mobile number contain 8 anywhere. It is similar to this one ना, तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हो ना, इज इट ओके ना? ये स्ट्रिंग और इंटीजर पे एक जैसे ही काम करता है। कुछ भी करेक्टर कुछ भी हो सकता है ना, ये तो नहीं बोला ना। टाइप अपने लाइक में ये तो देखा था ना, कुछ भी करेक्टर कुछ भी यूज कर सकता है। जिसमें अपने लिखा मोर करेक्टर कैन बी यूज विद लिटरल करेक्टर, तो लिटरल में आपका डिजिट भी आता है ना, ठीक है सर। है ना, आइदर लिटरल और नंबर्स लिखा है, हम्म। तब आ जाएगा। ठीक है, ओके। Next, rules of precedence. Whenever you are using multiple operators, so you have to take care about the rules of precedence value. Whenever you are using different operator, then you have to use arithmetic or you have to evaluate arithmetic operator first, then concatenation operators, then comparisons, and then these operator is null, is not null, null like in or not in, है ना, and then between, not between, then logical operator. Okay, okay, 3 are the logical. In the logical, not having higher precedence over the other, and having higher precedence over the or. Okay, so this is the precedence rules that I think all of you have used in the operator evaluation in other C or C++ programming. So similar way, you have to use this precedence or you have to follow. So whenever you are evaluating a condition, so it may happen then you have written the incorrect condition for evaluating for retrieving the information from the database. Okay, so like you can see, just follow the exercise and list the name of the student whose name contains second character as I or A. So how you can write this query? second character as I, तो एक लिख दोगे फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे लिख दोगे सेकंड आई। अब लास्ट में कुछ भी हो सकता है तो और लगा दो, फिर लाइक नेम लाइक लिख के दोबारा से लिख दो, this is first condition and this is a second condition, as we have to specify or so we have to specify. Okay, like यहाँ पे हमें क्या लिखें, list the roll number of students having marks greater than 70 and names contains character A anywhere. So both the condition will be true here, either of the condition can be true. Okay, here both the condition must be true, then the row will be retrieved. So you can write just here marks greater than 70 and name like A. So both the conditions should be true, then this whole condition will be true, then this row will be retrieved. Okay, like if I ask you to write a query to list the name and roll number of a student whose name contains A anywhere in the name and marks greater than 70 or marks less than 70, so how you will be treating this condition, how you are assuming this, how we have to specify this condition? Yes सर, मार्क्स के लिए नेम के लिए ए, मतलब हम देखेंगे ए और जो मार्क्स होगा उसमें अच्छा, और ये इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है नहीं सर, या फिर नेम ये अलग। समझ में आ रहा है? में होना हाँ हाँ सर, ये बात केस 1 था जो पहले मेंशन किया था, ये दूसरा मेंशन किया है, दिस इज अ केस 2. So what you are understanding, second one or first one? सेकंड सर। Second one. So how you will be going to write a query? If I'm writing query like select name चाहिए मेरे को and roll number चाहिए, okay, from student, okay, where नेम like कहीं पे भी हो सकता है, जी सर, and marks greater than 70 or मार्क्स लेस देन marks less than 70. Is it correct?
अगर केस 2 के लिए अपन को क्वेरी लिखना है, ये क्वेरी केस 2 के लिए करेक्ट है या नहीं है? सर होनी तो चाहिए। ये सर मतलब वो दोनों एक साथ वर्क कर जाना चाहिए ना, ये जो मार्क्स वाली कंडीशन है वो पूरी अलग होगी और नेम वाली। बिल्कुल सही। अपन ने देखा अभी एंड का प्रेसिडेंस और से ज्यादा होता है ना। जी सर। तो आपको पता है ये सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है? इसका सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इनका है, बेसिक बेसिक का। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन इवेल्युएट होंगी सेपरेट हाँ। सेपरेट। लॉजिकल ऑपरेटर्स का कंडीशन कम होता है, तो ये क्वेरी कैसे इवेल्युएट होगी? पहले ये कंडीशन चेक होगी कंप्लीट, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है? ये ऐसे इवेल्युएट होगी, बिकॉज एंड का प्रेसिडेंस ज्यादा है और से, तो ये इस टाइप से कंडीशन होगी। तो जो स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 60 हैं, उनका नाम कुछ भी हो तब भी वो डिस्प्ले होंगे ना। हाँ। तो इस केस में ये जो क्वेरी बनी वो तो केस 1 के लिए बनी, ना कि केस 2 के लिए, जी सर। है ना। तो डिफॉल्ट में ये ध्यान रखना, अगर हमको क्वेरी ऐसे एग्जीक्यूट करनी है, सपोज करो आई वांट टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी लाइक, मेरे को ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्या नेम ए तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं नेम में, एंड आइदर मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो और मार्क्स लेस देन 60 हो, then how you have to write that query? You have to put here bracket. Is it okay? यहां पे ब्रैकेट लगा दूं, you have to put here bracket. So ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, तो पहले इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब एंड ये कंडीशन ट्रू हो तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो वेयर ए इन एनीवेयर इन द नेम्स एंड मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो और मार्क्स लेस देन 60 हो। तो ये प्रेसिडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। You have to take care about the precedence whenever you are writing a query. Okay, so according to the condition, if you are asking this condition, then in this case mention the bracket. आपको ब्रैकेट मेंशन करना है, ठीक है ना। ओके यस सर। ओके ना। सो अभी तो मैंने ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, दिस विल बी ऑटोमेटिकली इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेरी। उसमें आपका मार्क्स ये तो अभी इसी के अकॉर्डिंग है। सो वट एवर वी हैव रिटन जस्ट वेयर a in anywhere and marks greater than 70, then whole query will be executed once and then this will be evaluated separately. Okay, okay. Second देखो, find the name of the students who lives in Patiala or Delhi and secure marks more than 70. तो वो या तो इसमें रहते हो पटियाला और दिल्ली में रहते हो and secure marks more than 70. If you want this query, then you have to put bracket here. Is it okay? And if you want to query like who lives in Patiala or Delhi and marks, but Delhi में है तो marks क्या होना चाहिए? More than 70. Then in this case, this query will be evaluated like that. This will be evaluated first and then this will be evaluated. पटियाला में है तो कोई चलेगा, लेकिन दिल्ली में रह रहा है तो उसके मार्क्स 70 से ज्यादा होने चाहिए तभी ही वो डिस्प्ले होगी। ओके ना। ओके यस सर। ओके। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज जस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। You can show the order by ascending order or descending order. Okay. Next clause, you can use alias along with the expression during the sorting condition. So what is the use of alias? So just you can see example of first order wise clause, then alias we will see. Okay. The syntax is for writing order by clause, just select column, whatever the column you want to display, or details you can display by specifying the asterisk table name, and then you have to specify the order by, and here you have to specify the column or some expression,
and the order ascending order or descending order that you want to display. Default order is ascending. अगर आपने ये specify नहीं किया then default sorting order is ascending order होगा. Okay, so just I ask you to retrieve the name of the student according to the ascending order of this of the marks. तो marks जैसे मैंने लिखा अमित एंड मार्क्स मैंने लिख दिया 58, अजय मार्क्स लिख लिया 60, अंकित ऐसे लिखा हुआ है और मार्क्स लिख दिया मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 और देन आई राइट दिस क्वेरी. सो हु विल डिस्प्ले इट फर्स्ट? कौन आएगा सबसे पहले? सबसे कम अंकित. मार्क्स अमित ही आएगा. सॉरी अंकित है. अंकित, ठीक है ना? अंकित, अमित and then Ajay. Okay, so that will be the row. So how you can write this query? You can write select name from student order by marks. Okay, here you can write ascending or you can write this query similar by removing this. There is a note not a mandatory as the default order is ascending order. Okay, एक सबसे important thing है about the order by clause that is very very important that you have to take care always. Order by clause must be specified in the last of the SQL query. Okay, whenever you are writing, so you need to specify in the last of the SQL query. Okay, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? select लिखते हैं. Okay, फिर क्या लिखते हैं? where लिखते हैं. सॉरी from लिखते हैं सबसे, फिर where लिखते हैं WHE where. इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे अपन ग्रुप बाय, फिर पढ़ेंगे हैविंग, उसके बाद आएगा अपना ऑर्डर बाय. और जिसमें एग्जीक्यूशन होता है सबसे पहले फ्रॉम का होता है, फिर वेयर का होता है. ओके, फिर ग्रुप बाय का होता है, फिर हैविंग का होता है, फिर सिलेक्ट का होता है और फिर छठवा ऑर्डर बाय. ओके, जैसे इनमें सिलेक्ट और ऑर्डर बाय में दोनों में ऐसा हो जाता है. सिलेक्ट ऑर्डर बाय में जैसे ये भी पहले हो सकता है, ये भी बाद में हो सकता है. तो ये तो लास्ट के दो हैं, तो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ये डिस्प्ले हो जाता है, बट पहले ये होगा. ओके, ओके ना? तो दोबारा बताना है एक बार. वट यही वाला चीज रिपीट करना है. Yes, sir, yes. तो ये तो क्वेरीज हैं जो सबसे पहले होगी, जो सारे के सारे अपन यूज करेंगे. इसमें अभी ये दो तो पढ़े ही नहीं है अपन ने, अभी इन दो को पढ़ना है अभी, तो अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, बट जब एग्जीक्यूशन होता है तो सबसे पहले फ्रॉम. जैसे क्या होगा जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको आगे जाके बड़ा पूरा टोटल. तो पहले स्टूडेंट टेबल सिलेक्ट होता है, ठीक है. टेबल में से फिर कंडीशन लगती है कि कौन कौन सी रोज आएंगी. तो जो रो एलिमिनेट होंगी वो कौन एलिमिनेट करेगा? वेयर क्लॉज. ओके, फिर वेयर के बाद अपन को ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बाय क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, फिर हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट होगा. अब ये दो तो है नहीं अभी अपने पास. उसके बाद क्या यूज होता है? ऑर्डर बाय. ऑर्डर कर देंगे, टेबल ऑर्डर कर देंगे हम एंड देन कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे. तो इसको 6 नंबर पर रख लो, 6 वाले, इसको 5th को कर लो. ऑर्डर पहले कर लेते हैं, इसमें ऑर्डर हो जाएगा. जैसे हमारा ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इस दोनों में फील्ड में पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? अंकित, और इसके मार्क्स आ जाएंगे 40, फिर तुम्हारे आ जाएंगे 58 और फिर आ जाएंगे 60. इसके बाद इनमें से क्या सिलेक्ट करना है हमको? नेम. तो ओनली ये फील्ड हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, तो ये 5th कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और ये 6th पे एग्जीक्यूट होगा. इज इट ओके ना? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन हमारा होता है. कई बार ये सिलेक्ट भी हमारा पहले एग्जीक्यूट होता है, बट ऐसे नहीं होता है. ये ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज जब देखोगे ना तब थोड़ा सा सिलेक्ट पहले आ जाएगा. जैसे ये ऑर्डर बाय नहीं है, ये नहीं है ना, तब ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा. हैविंग के केसेस में ये हैविंग ग्रुप, जो हैविंग वाला पढ़ाऊंगा ना मैं, तब तुमको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कंडीशंस कैसे लगाते हैं और ये कौन सा एग्जीक्यूशन होगा. ये ग्रुप बाय हैविंग होगा तब ये थोड़ा सा पहले एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है, वी विल सी. ओके, जस्ट आई एम एलिमिनेटिंग इट, है ना. तो नेक्स्ट देखो एग्जांपल फॉर द ऑर्डर बाय क्लॉज.
If I ask you to retrieve the name of the students according to the decreasing order of marks, then how you will display? You can just directly write name, student, order by the marks, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? Descending, DESC. So that will show the names of the student according to the descending order of the marks. Okay, तो पहले सबसे पहले स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट होगा, फिर उसमें ऑर्डर बाय क्लॉज लगेगा, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स सॉर्टेड हो जाएंगे सारी की सारी रोज, एंड देन नेम विल बी सिलेक्टेड और नेम का डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके ओके, नेक्स्ट देखो, यू कैन यूज द अलाइज. व्हाट इज द यूज ऑफ अलाइज? अलाइज का यूज भी काफी जगह होता है. सो यू कैन सी, सपोज आई आस्क यू टू अपडेट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीमेंट करना है 10 से. ओके, एंड देन डिस्प्ले करना है. हाउ यू कैन राइट? You can write this query like name and marks plus 10. तो मैंने यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगी. सबसे पहले हर एक मार्क्स ऐड हो जाएगा 10 से, अब ऑर्डरिंग हो जाएगी. तो पहले ये एग्जीक्यूशन हो गया सिलेक्ट का, फर्स्ट एग्जीक्यूशन हो गया, तो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा ये, देन आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे सारे के सारे 10 से, एंड न्यू कॉलम वी हैव मेक इट एज ए न्यू मार्क्स. जो मार्क्स आया, मार्क्स कॉलम का ये जो वैल्यूज था मार्क्स प्लस 10, it will be displayed as a new marks. If you are not specifying this value here, then how your result will be display? Your result will be display like name, दूसरा कॉलम का नाम क्या लिख के आएगा? मार्क्स प्लस 10 ऐसे लिख के आएगा. इज इट ओके? ये मार्क्स प्लस 10 को मेरे को क्या लिखना है? न्यू मार्क्स. तो you can use alias, column alias. So instead, if you can write this as marks plus 10 will be written as a new marks. So result will be displayed in the form of table, where your second column will be visible as new marks. Okay, instead of marks plus 10. Okay, then ordering will be happen. Okay, is it okay? Yes, sir. Okay, you can use a multiple attributes to sort the columns. Like मैंने marks के base पे भी sort करना है, name की base पे भी sort करना है. Then first sorting will happen based on the marks. अगर दो students के marks same है, then sorting will be happen on based on the name. Like if I specify like अंकित 40 लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा अजय, और यहाँ पे भी 40 लिखा, then which will be placed first? अजय ना. तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा? अजय, एंड देन अंकित. ओके, इज इट ओके? सो इन द above query you have to take care about that first, whatever the first attribute that you are specifying, sorting will be happen on the based on that, and the second will be used if first attributes having same value. Okay, एक और होता है लास्ट, ये है लिमिट एंड ऑफसेट. सपोज आई आस्क यू टू आइडेंटिफाई द टॉप 5 रोज और टॉप 10 रोज, लाइक टॉप 5 स्टूडेंट्स मेरे को क्लास में चाहिए, देन हाउ यू कैन यू राइट सच काइंड ऑफ क्वेरी? ओके, सो यू कैन डिस्प्ले द लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. लाइक इफ आई आस्क यू टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ओनली, तो आप कैसे लिमिट करोगे? सो इन दिस केस यू कैन यूज लिमिट और ऑफसेट. दीज आर द टू terms that you can use. Limit 10, it means would return the first 10 rows matching the select criteria. Offset used to identify the starting point. Like यहाँ पे बहुत सारी rows लिखा होंगे, from which you point like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे rows हैं आपके पास. From which point you have to start and how many rows you have to return. So you can use limit and offset along with each other in order to return the specified rows. Okay, so offset can only be used with the order by clause. So take care about offset whenever you are using offset. So offset will be used along with the order by clause and limit clause. Okay, otherwise you cannot use it. Okay, offset value must be greater than or equals to 0. Okay, it cannot be negated. Okay, so you can specify the example here. Here you can use order by clause, and then you have to specify limit and offset. Okay,
So limit, you can specify how many rows you want to display and from where you want to display. So order के फॉर्म में आपका आ गया, sorted order लिखा हुआ 1 2 3, from where you have to start. Okay, okay, and how many rows you have to skip, that you can specify as a offset, and how many rows you have to display, you can specify as a limit. So for this example you can see like select asterisk from student order by SID and limit to, मैंने यहाँ पे offset नहीं लिखा, it means it will be started from the beginning. Okay, सबसे पहले order हो जाएगा. ऑर्डरिंग मेरे पास ये ओरिजिनल टेबल है, यू कैन सी ये ओरिजिनल टेबल है, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड है. दीज आर द मल्टीपल रिकॉर्ड. वी हैव सेट द लिमिट 2. इट मींस ओनली फर्स्ट 2 रोज विल बी डिस्प्लेड. ऑर्डर बाय एसआईडी, एसआईडी से सॉर्ट कर रखा है, देखो एसआईडी सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है, आ रहा है. इस केस में ओनली लिमिट लगा दिया तो ओनली 2 रोज विल बी डिस्प्लेड. Similarly, if I put it here order by SID descending order में sort किया, तो descending order में sort करेंगे, then first will be 106, second will be 105, third will be 104, and मैंने लगाया limit 3, तो 3 row will be displayed होंगी. Offset 2, it means पहले 106 होगा, 105 होगा, 104 होगा, 104 होगा, 2 होगा, 1 होगा. तो मैंने offset लगाया 2, तो इस मीन 2 रो तो स्किप हो गई. स्टार्टिंग यहां से होना है और कितनी रो डिस्प्ले करना है, 3 डिस्प्ले करना है. तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो ये 3 रो डिस्प्ले हो जाएंगी. ओके, तो ये 3 रो डिस्प्ले हो गया. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है ना. चलो, तो ये आज के लिए था. अब आप एक्सरसाइज थोड़ा सा करो. ओके ओके, तो मैं अभी वहां पे बता देता हूं आपको, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके और असाइनमेंट डालता हूं. धीरे धीरे असाइनमेंट करना. वट एवर यू आर एबल टू डू दैट यू आर जस्ट डू इन. सो इन द असाइनमेंट्स यू कैन स्टार्ट योर असाइनमेंट. दिस आई एम शेयरिंग and then I am also uploading this assignments for today's lab. You can see what is the given in the assignments. So whatever you are able to do today, for that you can do. Rest you can left, you can do in the next lab till we will be able to cover all the syllabus. Okay, don't worry. Okay, so you can see first question is just create a table employee which has the following attributes. Okay, so these are the attributes. Okay, now you have to perform these query. I think in these query you don't have any query or you will not have any problem. I think here you can utilize like statement that we have studied, है ना. Start with C, ends with C. Okay, okay da. Okay, Yes, sir. okay. आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो ये सेकंड क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं वो यूज हुए हैं. तो अभी सेकंड क्वेरी को आप स्किप कर देना, ये आपको क्लास में भी कवर हो जाएगा. देन यू विल बी एबल टू डू दिस असाइनमेंट्स. ओके, रेस्ट यू कैन डू. ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा. अगर आप ये कर पाओ तो कर लेना, लेकिन आप सर पढ़ा देंगे तब आ जाएगा. तो नेक्स्ट लैब में मैं डिस्कस भी कर लूंगा, तो थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको. ठीक है ना. तो असाइनमेंट्स थोड़ा सा फंक्शन बेस्ड है, तो इसमें है कुछ नहीं, ये फंक्शन का यूज करना है डायरेक्टली. देयर इज नथिंग मोर देन दैट. ओके ओके, और बाकी का ये टाइम बेस्ड है, तो नेक्स्ट एन आवर. तो ये वाला 4th क्वेश्चन आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू डू. सिक्स्थ वाला कर सकते हो भाई, 6 वाला आप कर सकते हो, तो ये कर लेना. बाकी के ये फंक्शन अर्थमेटिक वाले, और इसमें 5th वाला क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन उसमें है कुछ नहीं, एक एक लाइन के आंसर्स हैं उनके. ये आपको फंक्शंस पढ़ा देंगे ना, तब देन यू विल बी एबल टू डू. तो फर्स्ट वाला कंप्लीट करो एंड 6 वाला कर लो. ठीक है, ओके, इज इट ओके? जो जो आपको बन रहा है अभी वो कर लेना, बाकी के स्किप कर देना. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं डेडलाइन बढ़ा दूंगा, देन यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, डोंट वरी. तो पहला क्वेश्चन आज फोकस करो बस, फर्स्ट वाला. ओके, बाकी के रेस्ट में जो है वो एसक्यूएल फंक्शंस में है, तो वो कोई नहीं, अभी सर पढ़ा देंगे और मैं भी नेक्स्ट लैब में कवर कर लूंगा. देन यू विल बी एबल टू डू ऑल दीज असाइनमेंट्स. ओके, तो 6 वाला असाइनमेंट आज की लैब में कर लो और नेक्स्ट वाली लैब में हो जाएगा आपका. ठीक है,
Okay. Yes, sir. Okay. So I'm uploading it